डाइपोल मोमेंट P क्रिएट हुआ एंड सपोज V इज द वॉल्यूम ऑफ दिस, सो कैपिटल P क्या हो जाएगा बताओ, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब ये ध्यान से देखो, दिस डाइपोल मोमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करोगे उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। सो दिस P इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्चुअली ये भी चीज सही नहीं है, ये एक्चुअली तब तक ट्रू होता है व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट टू हाई। व्हेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू हाई, its proportionality is with E also, E square also, E cube also. So this is known as non-linear effects. But let us, for simple case, E is not too high. E is not too high. So P will become equal to, I will have to introduce a proportionality constant. That proportionality constant is known as alpha, and in this way P becomes equal to alpha E. P क्या बन जाएगा, alpha E. Alpha is called polarizability. Alpha जितना बड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे, because what is alpha? P by E. So suppose कोई material in this, suppose there is some material and I applied 1 unit electric field. The value of P is 10. And there is another material, when I applied 1 unit of electric field, the value of P is 5. So which material has more tendency to get polarized, first one or second one? First one, because for 1 unit field it created 10 unit dipole moment. So that means polarized होने की tendency उसमें ज़्यादा है. So this is very very important property of a material. How it will, so first one is more sensitive to electric field or second one is more sensitive to electric? First one. So it tells a kind of sensitivity of material to the external field. So alpha एक तरीके से क्या बताता है, ये बताता है sensitivity of a material towards external electric field.